Travis, and we are now live. So thank you. And the moment we are live, everybody starts doing what they want. अभी तक सब अच्छे से बैठे हुए थे. हाँ उमेश जी जैसे ही लाइव गए सब उठ गए. But thank you everybody for joining us and welcome to this special episode. We are going to be discussing the grand opposition meeting tomorrow, and we're going to be discussing whether it is very united or not. Delighted to be joined by Mr. Prabhakar Kumar, who, of course, is a very well-known journalist, long time senior journalist. Been in Patna as well, and right now in Patna again, where all the action is happening. Thank you so much for joining us. Hi. Thank you. Thanks for having me. And of course, Umesh ji is back after a long time. Welcome back, Umesh ji. Namaskar. Pallavi was here, but she's disappeared. But let's just start straight away. Prabhakar ji, we'll do this in English and Hindi combined, whatever works at this point. So I just want to know from you कि माहौल क्या है अभी in Bihar? Is there excitement in Patna? There's going to be such a big meeting of all these big leaders. Yeah, as a journalist, from what I understand, for 2 days, today and tomorrow, Bihar would be the epicenter of the news, the national news, because this is the meeting which you are having here is really important in the context of the nation's politics and the kind of meeting which Nitish Kumar has called. The attendance so far is impressive, but if you could just refer to the ANI tweet, I just saw the tweet a few minutes back. The way Aam Aadmi Party is trying to build up pressure and trying to kind of blackmail Nitish Kumar into convincing Congress to vote on in Rajya Sabha against for the cause of the Aam Aadmi Party. So that would be interesting as to how united this united opposition remains. That would be interesting to see. As we talk, Mamata Banerjee has already arrived in Patna. Arvind Kejriwal is here. Punjab Chief Minister is here, and the rest of the leaders, they would be arriving here tomorrow. So today and tomorrow, certainly it would be the epicenter of the news and a very interesting development. We don't know whether this united opposition front would remain united and for how long this front would go. But as of now, this seems to be a very serious effort on behalf of Nitish Kumar. He has toured all the states. We all know that. He met all the leaders in person, and now he has called everyone in Patna. So Patna, that way, is the epicenter today. Yeah. Yes. उमेश जी आप ही हमें बताइए आपको क्या लग रहा है अभी how united is the opposition? देखिए अद्वैता जी, सबसे बड़ी बात है कि आज जो 22 तारीख है, 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की जुटान हो रही है. विपक्षी दल मिल रहे हैं कि अगला चुनाव में कैसे लड़ें और क्या तैयारी करें. और ठीक उसके 2 दिन बाद आपातकाल की इमरजेंसी की बरसी है. 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी. और ये कितनी मतलब विपक्ष की जुटान कहा जा रहा है और विपक्ष को जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन ये कितनी मतलब एक तरह से कहें कि कंट्राडिक्टरी है कि जिसने आपातकाल लगाया उसके साथ जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, उन्होंने उस जगह पर जहां से आपातकाल के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ मीटिंग कर रहे हैं. यानी इमरजेंसी लगाने वालों के साथ इमरजेंसी का विरोध करने वाले एक साथ आ रहे हैं. और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को जितना मैंने समझा है और जिस तरह से मैंने देखा है और जिसके थ्रू वो कांग्रेस से जुड़े हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ. उनका नाम आज नहीं लूँगा, मैंने तय किया है, क्योंकि उनकी 1-2 बार नाम लेने से उनको तकलीफ होती है. जिन्होंने कांग्रेस से जोड़ा और राहुल गांधी से मिलवाया, चाहे वो 2013 में हो या फिर बाद में अभी जो हुआ है, तो हर बार ये कोशिश वो रहती है कि हाथ मिला लिया जाए. लेकिन नीतीश कुमार के बारे में लालू यादव एक बड़ी बात कहते थे, हालांकि आजकल नहीं कह रहे हैं, कि नीतीश के पेट में दांत है. उनको समझना बड़ा मुश्किल है. तो ये ऐसी स्थिति में ये विपक्ष की जुटान या विपक्ष की एकता कितनी सफल होगी, यह देखने वाली बात होगी. क्योंकि आप देखेंगे कि सबके अपने अपने कंट्राडिक्शन है, सबके अपने अपने हित हैं और सबकी अपनी अपनी चिंताएं हैं. तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल
मैं पहली टिप्पणी करूं तो ये है कि आपातकाल का विरोध करने वाले आपातकाल को लगाने वाले के साथ उस जमीन पर इकट्ठा हो रहे हैं जहां से आपातकाल के खिलाफ या उस दौर में आपातकाल जिन्होंने लगाया उनके खिलाफ आंदोलन छिड़ा और देखते ही देखते देश की सरकार बदल गई थी और आपातकाल लगाने वाले इतिहास में समा गए थे। अद्वैता जी। जी, Pallavi, to come to you, there are, of course, deep contradictions in this alliance that is to be expected. And I think Umesh ji articulated it very well in terms of even the history, you know, the historical kind of differences between these alliance partners. But coming to Nitish Kumar, can he be trusted? The fact that he is doing this from Patna puts him in a stellar role as far as bringing the opposition together is concerned. So he's definitely working to a plan. But will he be trusted? So, I mean, I think the venue is very, very interesting that when we've chosen Patna, because there are a couple of messages going there. Suppose the venue was in Kolkata, maybe someone else would not have wanted to come there. If it was in Delhi, there was a possibility that maybe the Congress wouldn't want to be there because Delhi is seen as a bastion of the Aam Aadmi party. So it was thought that Patna is a safe option. And the second thing is, there is also a sense which I picked up from the Congress sources is that they feel that Nitish Kumar perhaps possibly come closest to the whole Hindi heartland kind of a leader. See, what are the plus points? Who are these all against? These all are against Narendra Modi, who is of course a Hindi heartland leader, so to say. Second, his communication skills. Third, speaks in Hindi. So they feel that Nitish Kumar possibly comes closest to that. And thus, no one will have a problem with Nitish Kumar. But the irony is, I remember at one point of time, the Trinamool Congress would tell us in their debrief sessions, and I think this was at a time when he was with the BJP, that, he's not a man we can trust. He's like a Palturam. He's sometimes with us, sometimes with him. Interestingly, very much the same words that they use for a Naveen Patnaik. In fact, Derek O'Brien has gone on record to say that here is Naveen Patnaik, who, he never will actually condemn, for example, what's happening in Manipur or when churches are being burned, but he'll happily take a picture with the Pope and he's siding on the side of the fascists, if you use the word of the Trinamool Congress. There is an inner mistrust. And I remember we were told very specifically that, and we had asked this question on the ordinance issue, and they said that, we are going to avoid contentious issues. जो भी contentious issues है, उसको हम लोग carpet के अंदर रखेंगे. We will not even discuss it. And look what has happened. Just a day before the meeting is to begin, you have Aam Aadmi Party making it very clear that they are actually going to walk out in case the Congress doesn't support. Knowing very well that Congress is also under deep pressure. On one hand, opposition unity ki baat karna hai, and on the other hand, you have, for example, the Punjab and Congress unit. So, on context of all of this, there is a deep mistrust. I mean, Umesh and Prabhakar were talking about, Umesh in particular was talking about the emergency. I see two important developments in the backdrop of which this meeting is taking place. One, of course, is the ordinance issue, and the second is Panchayat elections. Mamta Banerjee, Abhishek Banerjee, wherever they're campaigning, are attacking both the Congress as well as the BJP. And even as we speak, Adhir Ranjan Chaudhary, who's the state Congress chief of Bengal, very close to Rahul Gandhi, and the person who actually insisted that there should be a left plus Congress alliance in Bengal, is on the streets. He is protesting the poll violence, saying that, Trinamool Congress beats up its opponents. In the backdrop of this, think of it from the point of view of the voter. They'll think, what the hell is going on? Kis pe vishwas kare? Yeah. And there's a Congress worker who's also been killed in West Bengal at this time. And Rahul Gandhi's again not said anything. He usually doesn't speak up. Murshidabad, yeah, that's right. That's Adhir Ranjan Chaudhary's area. Correct. Pallavi, one quick question to you before I move to Sandeep. There was also this poster war that has erupted. I saw one news report where AAP has put up posters targeting Nitish Kumar. And maybe Prabhakar ji also might have some comments on this. And also, if you remember, Kejriwal went to, I think, Rajasthan, some place in Rajasthan, and he attacked the Congress party and Ashok Gehlot, knowing very well that in Rajasthan it's a straight one-on-one fight between the BJP and the Congress. And the Congress has always called the AAP a B team of the BJP because they say that wherever there's a straight fight between the BJP and the Congress, AAP goes and spoils the game for Congress because they go there, the anti-BJP votes get divided. They talked about Goa, they talk about Gujarat. You think the Congress party will ever trust Kejriwal? Never, ever.
And the whole prime ministerial issue, they may not want to talk about it now, but at some point of time, that issue will start coming up because let's admit it, it's almost a presidential kind of election. It's all about face now. So you have Modi versus who? You can't leave that blank for long. Fair enough. Sandeep, just coming to you very quickly, we're not seeing that kind. We're seeing some South India leaders coming in, but Jagan has decided to step out. What do you think is the feeling in the South right now with this opposition meeting? No, frankly, the voice from South India, you have to excuse me, I have a sore throat, so please bear with me. Uh, See, voice from the South, apart from, I guess, Pinarayi Vijayan and TRS and Stalin, Karnataka is ruled out, I mean, for obvious reasons. And Jagan is basically, he's a novice for all practical purposes. And at the state level in Andhra, uh, Jagan is facing the kind of backlash that is quite unprecedented, but let's not deviate from today's topic. And Jagan needs BJP and Modi more than we need him. So, with that out of the way, what do we have now? Why isn't this a repeat of the kind of drama we witnessed in the run up to the 2019 elections? Remember the huge rally in Calcutta, I think, with all the, Kumaraswamy and the whole Pulton of some 20 odd parties coming together, lifting their hands in some kind of solidarity. And then we know how all that went. So I think I don't see why this time around it should be different. And I have to refer to Pallavi as well as Mr. Umesh. I think he spoke earlier when both of them said that Nitish, who's called for this kind of some kind of alleged coalition together, he called him a Palturam, which is absolutely correct. See, Palturam is on one side, but on the other side, this simply shows Nitish Kumar's desperations to stay in power. Look, he has no successor in his own party for the simple reason that he hasn't built up any successor. And what is the fate of the other parties? Not just South, but this ragtag third front, 20th front, 2024 front. So, what is the kind of who are these people exactly? Who are these parties? They fall into three or four broad categories. One is what I call as the legacy parties. That includes people like Stalin, for example. He's got this legacy of Karunanidhi, which is a huge legacy which his tender shoulders cannot carry. As simple as that. And then you have the likes of Mamata Banerjee, and she was, if you remember, she was visibly nervous when the 2019 Lok Sabha results, were announced. BJP did phenomenally well, and according to some analysts, uh, the number of MP seats from West Bengal alone would have been plus 10 of its current tally, which is I think around 18 or 19, if I'm not mistaken. So that is one. Then who else is there? Nitish Kumar. We have already seen that his record. He's gone and shared the bed once again with his arch enemy Lalu Yadav. This. I mean, it's beneath contempt. It's beyond comment. Beneath comment. And what are the individual standings of all these people in their own states? So which brings us to the third category of politicians. Now, come the next assembly elections around, you don't know how many of these guys will actually, win back their sitting seats. And on the other side, you have someone like Modi. They are not scared as much of BJP as they are about Modi. So that is very clear. And show me one national party worth the name who can lead this coalition from the front. Congress party? Fine. Let's agree that Congress has a national presence.
But which person, which leader in the Congress can frontally challenge the BJP? Forget Modi. Show me one leader in the Congress who can challenge, say, someone like Smriti Irani. Prabhakar ji, I want to ask you this. How it what it is this is being perceived as is that the thing that's bringing these parties together is self-interest and attitude that is anti-Modi. How true is this, and will that be enough to hold them together? See, it's a very Herculean task, and Nitish Kumar understands this very well. Before this entire exercise started, he understands the fact that all these parties which have gathered today here in Patna, today and tomorrow, obviously, they have their interests clashing with each other in their respective states. So talk about Punjab, talk about West Bengal, talk about Delhi for that matter. I mean, the Congress, the Aam Aadmi Party, the Trinamool Congress, they are contesting against each other, and they are fighting a pitched battle against each other. But Nitish Kumar, what he did in last few months when we saw him traveling and touring the length and the breadth of the country, meeting the leaders, he was trying to unite them for a common agenda. The common agenda, as per him, was to contest, to make a united platform against Modi for the 2024. Now, Nitish Kumar understands these challenges very well, and as Deepak was saying, the leaders from many of the leaders from South talk about Odisha, talk about Telangana. They have all opted out of this alliance. Nitish Kumar, when we talk to him in person, he says that this is not the end, this is just the beginning. So he understands the challenges which is there in this entire exercise. There will be clash of interest. There will be people who would like Aam Aadmi Party did just now, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट करना होगा, नहीं तो वो वॉकआउट कर जाएंगे. तो इस तरह के चैलेंजेस आते रहेंगे. नीतीश कुमार is fully aware of this fact. What he is trying to do is that obviously he is doing it for his own aspirations. He knows very well that he has played a 15 long year in Bihar. Now this is his last chance. To 2024 would be a last dig at the prime minister's for the post of the prime minister. Now, will the JDU be the umbrella party? No. He understands that even if you have a 100% success rate here in Bihar, you will be able to just have 40. So that a party of having a 40 MP can't actually dream to get the top post. So he understands the fact that Congress will have to be the umbrella as far as this alliance is concerned. That's the reason why the change of the date you saw. This meeting which is happening tomorrow here in Patna, it was scheduled for 12th of the June. And this was rescheduled for 23rd simply because Rahul Gandhi and the Congress President Kharge, they were not able to make it on 12th. So the Congress, Nitish Kumar would always keep Congress in the forefront. He wants to be the pilot of this entire train which we have built, which has bogies of the several regional parties. The regional parties have clashes with Congress and they have clashes among each other. Nitish Kumar understands this very well, and he says that they still have time to sort this out, and one by one he'll try and sort this out so that this united front can actually be created, and on 24 you can see a tough fight for the BJP there at the center. उमेश जी, जो अभी वीडियोस आ रहे हैं पटना से, उसमें देखा हमने कि ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव के पैर छुए, and there is a lot of what you would say, a lot of shishtachar affection that seems to be being displayed apart from the politics which will take over tomorrow. So in terms of these people coming on the same platform, पॉजिटिविटी तो आ रही है. आपने थोड़ा बहुत किया है जहां उन्होंने पोस्टर लगा दिया, एंड लाइक प्रभाकर जी वाज आल्सो सेइंग दैट दे आर काइंड ऑफ सेइंग वील वॉक आउट इफ दिस डजंट हैपन, दैट डजंट हैपन. But overall, the intent seems to be quite respectful, and they seem to be making an honest attempt of it, at least. सॉरी उमेश जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ जी, बताइए. जी, एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि ये पॉजिटिव जो आपको सीन नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए. लेकिन आप देखिए, फिर से मैं हिस्ट्री में जाऊंगा कि कांग्रेस के साथ जितनी भी सरकारें बनी हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है. 1979
चरण सिंह ने लोकसभा का चेहरा भी नहीं देखा। 1991 चंद्रशेखर ने 4 महीने के बाद ही इस्तीफा दे दिया। आप फिर 1996 में भी देख सकती हैं, 1998 में भी देख सकती हैं, तो 97 में। तो क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? तो क्या ये पॉजिटिव जो पोस्चर दिख रहे हैं इसकी वजह से क्या भविष्य में सवाल नहीं उठेंगे? ये बहुत सारे सवाल उठेंगे और इसका असर अभी आप अभी देख सकती हैं कि नीतीश कुमार ने जो डेस्परेट लग रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनका अधिकार है, होना चाहिए कि उसमें शामिल होने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने मना कर दिया और उन्होंने बहाना बनाया है कि ये सारे दल 370 जब हटाया जा रहा था संसद में तो चुप थे। और पल्लवी ने बोला ही कि मतलब नवीन पटनायक और KCR की जो बात है। तो आप एक चीज और है कि पॉजिटिव पोस्चर तो है, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी ने बड़ी केयरफुली, बड़ी मतलब चालाकी से उन्होंने ये जो मामला है पटना की ओर मोड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कलकत्ता में होगा तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से निकली हुई हैं, नीतीश कुमार कभी कांग्रेस में नहीं रहे, तो उनकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। और एक चीज और देख लीजिए, कर्नाटक के चुनाव ने एक बड़ा इंडिकेशन दिया है। अब जितने भी अब मुस्लिम मतदाता हैं, आमतौर पर जो बिहार में जैसे लालू प्रसाद यादव या कुछ नीतीश कुमार के साथ थे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ थे या ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहे हैं, कर्नाटक में कभी वो जनता दल एस के साथ होते थे, कर्नाटक में 82% जो मुस्लिम वोटर है उस दिन वोट डाला है, जो 10 तारीख को पिछले महीने 82% वोटर शिफ्ट हो गया कांग्रेस की ओर। कहीं ना कहीं यह डर भी बाकी विपक्षी दलों को सता रहा है। इसके बावजूद अगर एकता की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर ये कोशिश तो ये होगी कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, जैसा कि अतीत में होता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पॉजिटिव पोस्चर ममता बनर्जी उस तरह से दिखा पाएंगी जैसा कि अभी दिखा पा रही हैं? ये सवाल जरूर उठेंगे। अब फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वाजपेयी सरकार में समता पार्टी, जो अब जनता दल यू हो गया है, समता पार्टी थी और ममता बनर्जी थी, तो उन दिनों एक मुहावरा ही चलता था, जार्गन चलता था, हम लोग रिपोर्टर थे, ममता बनाम समता। रेल मंत्रालय अगर नीतीश को चला गया तो ये ममता बनर्जी नाराज हो जाती थी। तो क्या ये सब इतिहास की बातें भुला करके ये जो मेढक तोड़ने की जो कोशिश हो रही है तराजू पर, ये सफल हो पाएगी? और मुझे लगता है कि बिहार बेशक संदेश देने की, मैसेज देने की कोशिश हो रही है, बिहार का मतदाता कम से कम इतना जागरूक है और ये सब चीजें समझता है। एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि नीतीश कुमार भले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2005 में बने थे, 15 साल से ज्यादा हो गया, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। हर बार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2005 से 2010 के बीच में उनसे कम सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, हर बार उनकी सीटें कम होती गई। इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री हैं। तो क्या भविष्य में ऐसा फिर संभव होगा? मुझे लगता है ये सारे सवाल उठेंगे। और जिस तरह से बिहार में ही हमने नाता तोड़ दिया, LJP के साथ फिर से रास्ता बन रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को पहले वो 2008 में लेके आए थे, भाग गए थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा वापस गए, फिर वापस आ रहे हैं, फिर भाग गए। तो ये भी कुछ सवाल हैं जिन पर ध्यान जाएगा। तो एक चीज ये भी है। और एक चीज और देखिए कि इतने पॉजिटिव पोस्चर के बावजूद जो आम आदमी पार्टी है वो एडमेंट है एक विषय पर कि जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लागू किया है या लाई है, जो अध्यादेश दिल्ली में, उसको लेकर के पहले चर्चा हो। और उस चर्चा को लेकर के आप देखिए कि कांग्रेस में ही विरोध है। दिल्ली कांग्रेस की जो कमेटी यूनिट है, अजय माकन खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, पल्लवी बोली चुकी हैं कि पंजाब की जो कांग्रेस की यूनिट है वो विरोध में है। तो बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल और भी है, आप देखिए कि जब ये गीता प्रेस को सम्मानित करने की बात हुई, गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, तो कांग्रेस की एक सरकार जो है जो अब राम का बहुत बड़ा गुणगान कर रही है। खासतौर पर आप देखिए छत्तीसगढ़ के जो दिल्ली में भी विज्ञापन देखते हैं भर भर फेस, तो उसमें राम 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 हो रहा है, बहुत ज्यादा राम राम हो रहा है, जो कभी राम का विरोध होता था। और उनके केंद्रीय नेता गीता प्रेस को मतलब सवाल उठाते हैं। तो क्या ये कंट्राडिक्शन कैसे सॉल्व होंगे और इन कंट्राडिक्शनों को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा? विपक्ष की रणनीति में ये भी उठेगा। नहीं तो ये विपक्ष की जो रणनीति होगी या जो एकीकरण होता है, जो अतीत में 1977 में हुआ, 1989 में हुआ, 1998 में हुआ, वह
कितना सफल हुआ, क्या ये सवाल नहीं होगा? और एक चीज हम लोग भूल जाते हैं, जब हम लोग व्याख्या करते हैं तो राजनीतिक दलों के एंगल से भूल कर देखने लगते हैं। आज का वोटर 1979 का वोटर नहीं है, आज का वोटर 1989 का वोटर नहीं है, वो ये सब भी चीजें देखता है। उसके पास सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम तरह के इंफॉर्मेशन के साधन है, वो ये भी देखता है। जब उसके सामने ये सब बातें जाती हैं तो वो उनको एड्रेस करने की कोशिश करता है, उनका जवाब पाने की कोशिश करता है, और इन मुद्दों पर भी वो राजनीतिक दलों को कसने की कोशिश करता है। और मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं आजकल जो नीतीश कुमार के पहले सिपह सालार रहे, नरेंद्र मोदी के भी रहे, प्रशांत किशोर को सुन रहा हूं, वो कहीं ज्यादा टू दी पॉइंट नजर आते हैं इन विषयों पर। तो मुझे लगता है कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर का एंगल है या जो वोटर का एंगल है, कम से कम ये भी देखें, नीतीश कुमार तो संदेश देंगे, उनका तो काम ही है संदेश देना, देते रहेंगे, उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना है, या भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से संदेश देगी, या ममता बनर्जी देगी, लेकिन क्या वोटर तक वो संदेश जाएगा? और एक चीज और देखिए कि आज ही कुछ ही देर पहले एक ट्वीट आया है मायावती का कि दिल नहीं मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए, ये कब तक चलेगा? तो अब तक जो विपक्षी एकीकरण हुआ है, हमेशा वो सत्ता के खिलाफ हुआ है, केंद्रीय सत्ता के खिलाफ हुआ है, उसमें एक सिद्धांत था, इस बार व्यक्ति है। हर बार आप देखेंगे सिद्धांत था, चाहे 1977 हो, चाहे 1989 हो, ठीक है, उस समय राजीव गांधी थे, उस समय इंदिरा गांधी थी, या 1996 में नरसिंह राव थे, लेकिन उसमें एक सिद्धांत था। पहली बार था आपातकाल, दूसरी बार था भ्रष्टाचार, तीसरी बार था ये वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण। इस बार कोई सिद्धांत नजर आ रहा है? आप बताइए, कहीं नहीं नजर आ रहा है, कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ व्यक्ति नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि सिद्धांत की राजनीति अगर होगी तो उसको थोड़ी देर तक के लिए स्वीकार किया जा सकता है, वो स्वीकार्य होगी। सिद्धांत से इतर जब व्यक्ति की राजनीति होती है तो उसका देर तक चलना बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा। और जब व्यक्ति की राजनीति होगी तो क्या गारंटी है जो अतीत में ममता बनाम समता होता था फिर नहीं होगा, या जिस तरह से अभी हम उनका खुद मांझी जी जिनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था छोड़ के भाग गए। एक चीज और देखिए कि नीतीश कुमार ने जब पिछले दिनों, ये नीतीश कुमार तो नहीं कर मतलब सीधे सीधे थे, उनके नए अध्यक्ष राजीव रंजन लल्लन ने जब अपनी कार्य समिति बनाई तो केसी त्यागी किनारे कर दिए गए थे, अचानक 2 महीने बाद केसी त्यागी की याद आती है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें वोटर भी देख रहा है, और ये सब सवाल गठबंधन अगर बना रहे हैं तो उसमें उनको सोचना पड़ेगा, और सोच भी रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि हम गठबंधन बना करके वोटर को समझा लेंगे और वोटर को एक संदेश दे देंगे, हम संदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो संदेश कितना प्रभावी होगा ये समय की कसौटी पर देखा जाएगा। मुझे लगता है इस नजरिए से भी हमें इन सब बातों को देखना चाहिए। Right. Sandeep, you wanted to come in and then I'm going to go to Pallavi. Yeah, sure. It was quite a refreshing, walk down the memory lane. Lots of things come to mind anyway. So, but just to give a tangential point about what unites these unlikely bedfellows known as the Great Indian Opposition, uh, is it secularism or is it Modi hatred? So let's examine both these points briefly. Top of the list is, hatred of Modi. Remember, it is pure and visceral hatred for Modi. It is not just that they're opposing Narendra Modi as, a leader of opposition or belonging to a different party, but of the same country. They are opposing Modi. They've made this fight to be totally personal. कि हम कुछ भी कर देंगे, देश को जला डालेंगे, but this man has to go. Somehow we need to depose him. So this is the undertone of all their utterances and their whatever campaign slogans or whatever it is. That is one. Now this is exactly how Pakistan defines itself. I'll give you an example. Look at the state of Pakistan. Let's say since the last 40 or 50 years, say 40 years, it is a hellhole. 40 years back, it was a hellhole in making. Now it is a full-blown hellhole. Every other day. I mean, what do you mean that, one party, Imran Khan's party, his supporters, go and, they set fire to the army headquarters,
unleash a civil war. Which peaceful country, which stable country does this against its own country? But what unites Pakistan? Anti-India, hatred for India. Why hatred for India? Because it's a Hindu country. This is how these fellows also define themselves. What unites all of us, whatever 15, 20 odd opposition parties? Hatred for Narendra Modi. It is the same script playing out there. Now, very interestingly, correct me if I'm wrong, I haven't seen a single statement from the NCP so far, which is very telling by itself. Has there been And anything, Pallavi? Has there been anything from the NCP? I know RLD has stepped out. I RLD just has decided one, not to one, participate. one sec. Let me finish. So Yeah. NCP is one. The problem out here is that exactly like Pakistan, but in a slightly different way. It is a variation in the same script. The problem with all these opposition parties is that everybody wants to become the PM. And how many seats? Even if they, all these parties, even if they score 100% hit rate, how much does Mamta get to the table? 38 Lok Sabha seats, 42, whatever, around that range. No party can bring to the table more than 40 MPs, even if they do a 100% hit rate, right? And we are taking Congress out of the equation. So there you go. So given this equation, right, how is it possible that everybody wants to become India's next prime minister? What opposition unity are we talking about? The reality is that they want to depose Modi because he is coming in the way of their carefully cultivated fiefdoms. That's what these leaders are. They are feudal lords. It's a legacy. And that is number one. Number two is that where is the Hindu vote? This is the part about secularism. Where can these parties, either individually or collectively, which of these parties can get Hindu votes? Make a difference. And on the Muslim side, on the side of Muslim votes, they are all cannibalizing their own Muslim vote banks. So what are we talking about here? Okay, good. Yeah. Pallavi, this RLD is not there. NCP, like Sandeep has pointed out, we've not heard from them as yet. So I'm just intrigued to know, what these parties are up to, and if like Sandeep has pointed out, this is the same kind of parivarvadi kind of collaboration that's coming together. Is the counter of the BJP saying that these parties are driven by self-interest enough to challenge them? RLD, of course, has opted out, saying they are health grounds. NCP so far has not said anything. See, both Sharad Pawar and Mamata Banerjee have gone on record to say that they're not very comfortable working with Rahul Gandhi. That was one of the main reasons why Sonia Gandhi was always being asked to step in. Things are a little different this time round. Rahul Gandhi is, of course, going to be there, but then so is the Congress president, which is Mallikarjun Kharge. So, I don't think the rest of the parties like Mamata and Sharad Pawar will have a problem. But I'm going to have a little different point of view because I also saw the formation of the UPA in 2004. And I remember just before the UPA was formed, there was a lunch party at Sonia Gandhi's residence at 10 Janpat. And Dr. Manmohan Singh and Pranab Mukherjee, all of them were there. And I remember we had, that time she was talking about, forming a kind of a united front. And she was clearly taking the lead. We had asked her a question about Parivarvad and dynasty. And, she mentioned a lot of people, but very interestingly, she mentioned DMK. She says, what is Karunanidhi and who is his son, Stalin? She's mentioned Sharad Pawar and Supriya Sule and all of that. That anger towards DMK was palpable. She's also very angry with the DMK because she's always blamed them for not doing enough to give justice as far as her husband's assassination is concerned. But what happened a couple of months later? DMK became one of the allies of the Congress and till today remains one of the strongest alliance apart from the RJD. So that self-interest, that self-interest is there now. At that point of time, we saw people with different ideologies, different political lineage coming together to take on the BJP. And the cynicism we see now was also there at that point of time. Let's not forget, maybe the degree is different, but Atal Bihari Vajpayee was no less of a legend.
And everyone thought, can the Congress do it? Can a Sonia Gandhi do it? They managed to do it, which is why I'm going to have a little alternative point of view. I'm very cynical of this opposition unity meeting tomorrow because lots of things have changed. Yes, the biggest thing is that unlike then, this time the regional parties are very ambitious. They are more cutthroat. They are very aggressive. They have national ambitions, which is why I think the present situation is a little different. But to completely dismiss them off, I think would be, in politics, one should never do. Second thing is everyone wants to be a PM, yes. But you know, the strategy that they've adopted, and which is what they tell us by way of sources, is one simple line: every CM can become PM. What is it then? What's happened? If they announce, say, a Rahul Gandhi as a PM phase, why would a Mamata Banerjee core voters even vote for her? Why will anyone in the TMC cadre work for them? They'll say, why should I? She's not becoming the PM. Same thing is that in the case of DMK as well. So they're trying to throw this confusing thing card by, you know, any of us tomorrow, you support us. If we get the numbers, if we get the largest number of MPs from our side, I can become the PM. This is the kind of lie or whatever misinformation, if you want to call it, that they are peddling. And I guess in politics, they say everything is fair in love and war, and also in politics. So I think that's the strategy they are being adopted. But I would see the opposition unity meeting with a little less of cynicism, though I know it is something from the start is very ominous. But as they said, this is not going to be the first meeting. There are going to be endless rounds of meetings and lots of things will change. What the Congress, very quickly, I'm wrapping up, what Congress is hoping and banking on is they win Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and hopefully Rajasthan. So 3 states in the kitty, this stock goes up. I mean, before Karnataka, no one even wanted to look at the Congress party in the opposition. They said, "Inka report card dekho, they are failures. Who are they to talk about?" Today, the Congress, you know, in their typical style, is very gung-ho, very complacent. They become smug, they become arrogant. And as one NCP top leader himself told me, ki, look, the one party which is actually going to be the death knell, possibly, of the opposition unity is going to be the Congress party. I think the Congress party will also need to climb down, stop becoming like a big brother and this sense of entitlement. That is where I'm cynical about it. But my past experience with the formation of UPA doesn't make me 100% cynical. 2 quick points. Yeah. Some great commentary, Pallavi, by the way. Uh, I recall Mr. Umesh, when he was giving his commentary, say how Congress has always been responsible for breaking coalitions, and the 2-term coalition that the Congress pulled off successfully between 2004 and 14, they learned that art from Mr. Vajpayee. How to cobble together these disparate forces and then isko itna do, usko utna do, this kind of thing. So that is one thing. And as far as the Karnataka elections are concerned, the results, yes, there's a huge swing in the Muslim votes and whatever, but on the ground, I'll tell you how it panned out. It was a completely anti-BJP vote, much less a pro-Congress vote, which the Congress now is learning the hard way. So you have headlines out here, saying that a civil war-like situation has erupted here. People are actually throwing, their bags and handkerchiefs and jumping inside the windows of buses for free travel. So things like that, they don't know how to do this free electricity 200 units ka scheme, all the 5 guarantees that were promised. And this can come back and bite them in the national level also, if the BJP gets its narrative right. Those are my limited points. Yeah, that's always a big question. But Prabhakar ji, I want to know from you: can this opposition Gathbandhan go forward without a face for Prime Minister and carry on with the every CM can be PM narrative, considering that they are going to be standing up against someone like Narendra Modi, who's extremely, charismatic to his section of voters, which is and really motivates them and drives them to vote. Can they go on with this? We don't really have a PM candidate. You'll have to unmute me. Yeah, sorry. Yeah. So that's the only way forward. So just imagine a situation where you actually decide a PM's candidate
against Narendra Modi in this united opposition front, so-called united opposition front, then everything goes haywire. Basically, what Nitish Kumar is the guy who is trying to pilot this entire thing. And time and again, he's trying to make a point that he himself is not a prime minister candidate, which is actually far from the truth. The fact remains that he nurtures that ambition of being a prime minister, but he can't actually go on record saying it. So, from what I see and from my experience, that this so-called united opposition front would continue to remain a faceless front. And as Deepak rightly said, they have rallied. It's an anti-Modi front, so there's no ideology behind it. It's not against a particular ideology. It's basically anti-Modi front. So these parties, they have united together to fight against Narendra Modi, and it's the hatred for Modi which actually kind of brings them on a platform. And they can't afford to kind of announce a face for this for 2024, because the moment they do it, the entire house will come crumbling. So they know this fact very well. That's the reason why they would never, till the last moment, till the election happens, actually, until the results are out, they would name a candidate or a face. बात कर ली विपक्ष की कि वो उमेश, एक और सवाल है। हमने बात कर ली विपक्ष की कि वो एकजुट कैसे हो सकते हैं, उनमें इतनी लाइक हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं। पर अगर आप भाजपा को भी देखिए तो 2014 से लेके अब तक उनके एलाइज उनको छोड़ते जा रहे हैं। शुरुआत से आप देखिए, वो अगर वो चंद्रबाबू नायडू हो, लाइक लॉन्गेस्ट रनिंग अलायंसेस जो शिरोमणि अकाली दल के साथ था पंजाब में, शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे फैक्शन का, तो उनके भी एलाइज उनके साथ दे आर नॉट स्टिकिंग अराउंड। तो उनके लिए कितना कठिन होगा कि कुछ एलाइज को वापस फोल्ड में लाना, अगर इनको काउंटर करना है कि कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले ही लड़ सकते हैं मोदी जी के नाम पे। हाँ, जो साउथ के स्टेट है ना, वहाँ आप देखिए खासतौर पर तमिलनाडु और केरल में या आंध्र प्रदेश में, वहाँ छोड़ करके जो पिछले जो चुनाव हुए हैं, जो विपक्ष करना चाहता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो एकजुट होना चाहता है, उन चुनाव में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर सीधी टक्कर हुई थी और हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपर एज में रही, अपर हैंड रहा उसका, उसने एज लिया, बहुत बड़ी जीत हासिल की। आप देख लीजिए कि 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें बनी और एक साल बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ। दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल को भारी बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में गई। तो ये एक चीज जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, ये मुझे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, आज के दौर की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो विपक्ष को अपने पिच पर लाना चाहती है और विपक्ष कहीं ना कहीं फिर से उसी की पिच पर जाना चाह रहा है। ये जो अभी गठबंधन की बात हो रही है और थोड़ा बहुत जो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, वो इसकी वजह यह है कि कर्नाटक में जो उसको हार मिली है, या हिमाचल प्रदेश में देखिए सिर्फ 37,000 वोट उसको कम मिले, लेकिन सरकार उसके हाथ से निकल गई। हालांकि कई सारे कारण होते हैं हारने के, लेकिन एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं उसके खिलाफ वोट पड़ा और वो हार गई, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस लूज है। लेकिन एक चीज और देखिए कि चंद्रबाबू नायडू किस नाम पर गए थे। चंद्रबाबू नायडू 2004 तक, 1998 से लेकर 2004 तक रहे, तो वो आउट ऑफ वे में समर्थन करते थे, आउट ऑफ बकेट थे, एक तरह से बाहर से समर्थन करते थे। बट वो कितना ग्रांट ले जाते थे, कितना अन्न ले जाते थे, उस समय कहा जाता था कि वो बाहर से समर्थन देकर के वाजपेयी पर बहुत ज्यादा दबाव बना लेते हैं, तो बहुत ज्यादा वो बाद में इसलिए अलग हुए कि उनको लगा जो कि नरेंद्र मोदी के आने से मुस्लिम वोट बैंक उनका नहीं रहा, तो उनके जाने का क्या फायदा हुआ। आप लगातार देखिए कि वो सरकार से बाहर है। पहले वाईएसआर ने आउट किया, अब उनके बेटे ने आउट कर रखा है, या उधर से केसीआर ने आउट कर रखा है। इसी तरह से शिरोमणि अकाली दल को देखिए, वो किसान आंदोलन के दौरान बाहर गया, उसको लगा कि वो किसानों का सपोर्ट करेगा तो भाजपा का विरोधी जो वोट है या लोगों का क्या है, अभी भी उसकी स्थिति क्या है, वो तीसरे नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि उनको भाजपा की बैसाखी चाहिए। विपक्षी दल के गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में एक अंतर है,
अंतर यह है कि विपक्षी दल अपना अपना कुनबा बचाने के लिए एक हो रहे हैं, अपना अपना बेस बचाने के लिए एक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में लोग भाजपा का साथ लेने के लिए एक हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको भी ये पता है, जैसे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात किया, तो वो बहाना है, राजनीति में हमेशा बहाना किया जाता है कि एक्यूज दिया जाता है कि भैया हमने ऐसे कर दिया, और वो उन्होंने 270 370 में उन्होंने समर्थन नहीं दिया था। वो कहीं ना कहीं इंटरनल वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी। इसी तरह से एन चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश में एक दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जैसा कि अपने शुरुआती स्टेट में जो दिया कमेंट्री की संदीप ने, तो उसमें उन्होंने कहा वाईएसआर के जगन रेड्डी भी वाईएसआर कांग्रेस के, वो भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ नहीं सकते। ठीक है कि उनका अपना एक अनुभव है, एक अपना वहाँ उनका भी बेस वोट बैंक है, और वही स्थिति एनटीआर के तेलुगु देशम पार्टी की भी हो रही है जो एन चंद्रबाबू नायडू के पास है। तो कहीं ना कहीं वहां भाजपा के लिए संकट खड़ा होगा। तो ये तो है, लेकिन ये है कि कई बार गठबंधन जो होता है वो मोरल बूस्टअप के लिए भी होता है। आप याद कीजिए 2019 में जब 2018 की हार हुई थी तो भाजपा का उस समय भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, लेकिन वो भारी जीत के साथ आई। ये बिहार में भी दिखा है, 2009 में उपचुनाव हुए थे 16 सीटों को, प्रभाकर जी को याद होगा, 16 सीटों में से 13 या 14 सीटें जनता दल यू और भाजपा गठबंधन के पास थी, लेकिन उपचुनाव में उनको महज 7 सीटें मिली थी, बाकी सारी सीटें आरजेडी जीत गई थी और एक कांग्रेस जीती थी। फिर उनका भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को फिर से वापस लेके आए थे, और देखिए 2010 में 2005 से भी भारी जीत हासिल की। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों गठबंधनों के नेचर में एक अंतर है। एक अंतर यह है कि वहां लोगों को भाजपा का साथ चाहिए, एक्सेप्शन है वहां तमिलनाडु एक्सेप्शन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, केरल भी है, लेकिन और आंध्र प्रदेश भी है, लेकिन फिर भी उनको साथ चाहिए जो छोटा वोट बैंक है। और मैं इससे ठीक है कि सहमत नहीं हूं कि कर्नाटक में सारा का सारा वो भाजपा विरोधी वोट बैंक था। नहीं, भाजपा अपना वोट बैंक सीधे रखी थी, जो कुछ सेगमेंट्स थे वो सब एक जगह यूनाइट हो गए क्योंकि हराना है। जैसे मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा था, मैं खुद दिल्ली की सड़कों पर उतरा था रिपोर्ट करने के लिए, तो मैं देख रहा था कि केजरीवाल को लोग जो कुछ ही दिनों पहले वोट दिए थे, खासतौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय था, वो कांग्रेस को वोटिंग कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक नेचर बदलता है, और इसी का डर है। आप देखेंगे कि जो गठबंधन है इसकी वजह से एक हो रहा है। और रही बात नीतीश कुमार की, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बार वो बहुत बड़ा कोई चमत्कार करने जा रहे हैं। जब आपसे बात हुई थी कि हमें इस कार्यक्रम में बैठना है, तो मैं एक बिहार के लोकल चैनल को देख रहा था, थोक के भाव से जनता दल यू और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, थोक के भाव से। कोई जिला परिषद का सदस्य है, कोई अध्यक्ष है, कोई कुछ है, अब इसको क्या कहेंगे हम। तो कहीं ना कहीं देखिए, और एक चीज और है, जब चुनाव आते हैं तो आना जाना बहुत लगता है, वो सारे सिद्धांत दरकिनार हो जाते हैं। सिद्धांत सिर्फ पार्टियों के टॉप लेवल के लीडर्स के पास ही हो रह जाते हैं, आम लोगों के पास नहीं होते हैं। आम कार्यकर्ता, आज आम नेता जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, विधानसभा जाना है, सांसद बनना है, वो सारा का सारा सिद्धांत उसका धारा का धारा रह जाता है। आरएसएस वाला है कांग्रेसी हो जाता है, कांग्रेस वाला है तुरंत आरएसएस बन जाता है, वो तृतीय वर्ष नहीं वो चतुर्थ वर्ष तक कर लेता है, वो दावा करने लगता है कि उसने चतुर्थ वर्ष कर लिया है। तो सिद्धांत नाम की कोई चीज खासतौर पर टॉप लीडरशिप को छोड़ दीजिए तो नीचे के लेवल पर नहीं होती है, ये आवाजाही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है, फिर से मैं कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग आना चाहते हैं उसमें हल्का सा सम सेक्शन ये है, जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव से कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हुआ है। वो भी चाहती है कि समर्थन मिले और उससे उसके कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने में मदद मिलेगी, लेकिन वहाँ जो समर्थन पाना या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात है तो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की बात है। और यहाँ सब लोग साथ आ रहे हैं तो वो इसलिए आ रहे हैं कि हम सब मिल करके अपना अस्तित्व बचाएं। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर मायावती नहीं आएंगी तो आप कैसे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा गठबंधन बना पाएंगे। हालांकि इसका भी आपको इम्प्लीकेशंस दिखा पिछले चुनाव में कि मायावती और अखिलेश यादव मिल करके लड़े थे लोकसभा के चुनाव में, और उस समय आप देखेंगे कि
अगर हम जो जाति के आधार पर या सामाजिक न्याय की शक्तियों की बात करते हैं, सोशल जस्टिस वाली पावर्स की, तो उसके हिसाब से तो अखिलेश और मायावती के गठबंधन को कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन क्या हालत हुई, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। ऐसा दक्षिण के राज्यों की अभी भी वहाँ कैरेक्टर और सीन्स चेंज नहीं हुए हैं। 3 राज्यों में आप देखेंगे कि जब आमने सामने का मुकाबला होगा, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आमने सामने का मुकाबला हो, वो पिच बनाती है और उस पिच पर लोग आते हैं, उनको वो पटकती है, खासतौर पर नेशनल चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। और कहीं ना कहीं वो अंदर खाने में चाहती है कि सब मिले, उसको मिलने से डर नहीं है। आपने देखा क्या किसी के चेहरे पर शिकन? मुझे नहीं लगता है। हाँ, वो अपनी किलेबंदी भी मजबूत कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक घटना बताता हूँ। कुछ दिनों पहले कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई किसी राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी के टॉप 3 लीडर्स में से किसी एक को लोगों ने कहा कि देखिए कार्यकर्ताओं को तो तरजीह नहीं दी जा रही है, इसीलिए पार्टी हार रही है। तो क्या बोला लीडर ने कि आप अपना काम करिए, हमको जैसे मैनेज करना होगा हम कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस उनका बोल रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस कई बार लूज हो जाता है, कई बार ये लोकतंत्र है। लेकिन ये जो गठबंधन है, मेरा ये मानना है कि गठबंधन बन भी गया तो उसको इतिहास के सवालों का सामना करना पड़ेगा, और इतिहास के सवालों का जब वो सामना करेंगे तो उनके लिए स्थिति बहुत चिंतनीय होगी। वो जवाब नहीं दे पाएंगे, और वो जवाब जब नहीं दे पाएंगे तो वो पिच, उससे जो पिच तैयार होगा उसमें उनके लिए बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं होगी। ये आज मैं कह रहा हूँ। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये गठबंधन इन पार्टियों के लिए घातक भी हो सकता है आगे चल के? बिल्कुल। आप यहाँ हो रहे कमेंट देख लीजिए, आपने ही जो हो रहे हैं उसमें देख लीजिए कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं। तो अब वो जनता का एक रिपरकशन है। आप देख लीजिए कि जैसे ही बात होती है तो तुरंत लोग जुटने लगते हैं, और कहीं ना कहीं एक बात टिक के आ जाती है कि आखिर क्या बात है कि एक ही व्यक्ति पर सब तुले पड़े हैं। और इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि ये एक व्यक्ति के खिलाफ अगर तुले पड़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है, सबका इतिहास पता है। अब सामाजिक न्याय के नाम पर आप सब कुछ ढक दीजिए, लेकिन इतिहास नहीं ढक सकते कि किसी ने 0 से शुरुआत की और वो कहां तक पहुंच गया, किस पर क्या आरोप लगा। लोहिया के सब भक्त बनने की कोशिश करते हैं। इस पूरे आंदोलन में देख लीजिए, लोहिया ने पहले गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और वो कांग्रेस के खिलाफ था। गैर कांग्रेसवाद का नारा उन्होंने 1962 में दिया, जब वो पूरे जोर शोर के साथ चुनाव मैदान में उतरे, फूलपुर में हार गए, लगता था कि वो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा उनका आभास था। तब उनको लगा कि हमें कांग्रेस के खिलाफ डॉक्ट्रिन देनी होगी, गैर कांग्रेस दिया। उसके उपजे हुए लोग इस पूरे गठबंधन में, एक्सेप्शन है उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी। लेकिन क्या हुआ, वो फिर लोग उसी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब भी तो पूछा जाएगा ना, और उन जवाबों का जब असहज होगा, और ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जब नीतीश कुमार 2013 से बाद फिर 2015 में चुनाव जीतते हैं और 2016 में जाकर के छोड़ देते हैं, तो यही तेजस्वी उनको पलटू चाचा कहने लगते हैं। उनके बारे में एक पूरी की पूरी रैली निकालते हैं, चंपारण से शुरू होती है और गांधी जी की धरती कही जाती है चंपारण, वहां से उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और वहां से पहला ही भाषण, मैं वो भी भाषण सुना हूँ, मैं उस समय वहीं था बिहार में, कि ये हमारे पलटू चाचा कब बदल जाए, और वहां से पलटू चाचा कहना शुरू करते हैं। क्या जनता इन सवालों को नहीं पूछेगी कि भैया ये पलटू चाचा अचानक से कैसे प्यारे चाचा हो गए? तो निश्चित तौर पर गठबंधन के जो अंतर्विरोध है वो उनको भी एड्रेस करना होगा, और जब उनको एड्रेस किया जाएगा तो वहीं गठबंधन के जो वो हैं कंट्राडिक्शंस हैं वो सामने आएंगे। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसका इंतजार कर रही होगी। और जिस तरह से आज सम्राट चौधरी ने भाषण दिया है, प्रभाकर जी ने देखा भी होगा, बहुत जबरदस्त वो किया है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन है, वो भी उस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और चुनाव जीतना और हारना तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव की जीत और हार तो सिर्फ 3 महीने में तय होती है, और कई बार तो आखिरी घंटों में हो जाती है। जैसे बनारस में मुरली मनोहर जोशी जी 2004 का चुनाव तो बस आखिरी 3 घंटों में जीत गए थे, नहीं तो लग नहीं रहा था कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि वहां कुछ ऐसी हवा चली और जो इनको वोट नहीं भी देना था वो उतर गए। तो कई बार चुनाव आखिरी घंटों में होता है, और किसने सोचा था कि शाइनिंग इंडिया बुझ जाएगा एकदम से, लेकिन वो बुझा। जब 13 मई 2004 को नतीजे आने लगे थे तो हर आदमी ये सोच रहा था कि हम वाजपेयी जीते, लेकिन उनका
सांसद हारे। तो स्थितियां कई बार बदल जाती हैं और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सिद्धांत होते हैं ना, वो सिर्फ तात्कालिकता के लिए होते हैं, कंटेम्परेरी होते हैं, वो भी मतलब अल्ट्रा कंटेम्परेरी होते हैं, वो ये नहीं होते हैं कि बड़ी लॉन्ग टर्म में सिद्धांतवाद होता है। और लेकिन आज का वोटर सिद्धांतों को भी जानना चाहता है, बाकी सवालों को भी जानना चाहता है, उनका भी उत्तर जानना चाहता है, उनका भी आंसर पाना चाहता है। और इतिहास के सवाल नई पीढ़ी अब पूछती भी है। और नहीं, अगर किसी को भरोसा हो तो मेट्रो में चले, बस में चले, उसको पता चल जाएगा। बिहार की चाय की दुकानों पर चले, उत्तर प्रदेश की चाय की दुकानों पर चले, या हरियाणा के ढाणियों पर जाके देखें और राजस्थान की ढाणियों पर देखें। मैंने देखा है कि एक मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे कि वो चुनाव जीत रहे थे, और मुझे जब उनके राज्य में जाना पड़ा, चाय की दुकान पर मैंने उनके पक्ष में बोल दिया, तो मुझे लोगों ने पीटा नहीं था, बाकी सब कर दिया था। मैंने वहां से आकर लौट कर उनको बोला था कि आप बुरी तरह हार रहे हैं। झांसी में मैंने एक व्यक्ति के बारे में प्रशंसा कर दी, तो उस दिन तीर्थ का नहान था स्टेशन पर झांसी का, मैं शताब्दी का वेट कर रहा था। मैंने, मेरा चेहरा तो इतना पहचाना नहीं है कि लोग जानते हैं कि क्या है, तो मैंने उनकी प्रशंसा कर दी। वहां भी लोगों ने मुझे पीटा नहीं बल्कि छोड़ दिया था। और मैं लौट के आया तो सज्जन मेरे मित्र, मैंने उनसे कहा था कि आप बुरी तरह हारेंगे, बुरा मत मानिएगा, और हार गए थे। तो हमें जनता के मूड को देखना चाहिए। नेता तो अपने ढंग से एनालाइज करता ही है, कोशिश करता ही है, और वो उसके चेहरे पर कई बार उसकी आंख पर पर्दा भी होता है। मुझे लगता है कि अगर हम समीक्षा कर रहे होते हैं तो इन सब चीजों से भी हमें बचना चाहिए, तभी हम एक रियल पिक्चर दे सिचुएशन, सकते हैं। रियल जी, पिक्चर दे सकते हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। एंड जस्ट फाइनल कमेंट्स, Sandeep and Prabhakar ji, before we close the show. But let's quickly, Sandeep, to you, and then final last words to Prabhakar ji. Yeah, so this opposition unity or alleged opposition unity, why is this happening? One thing is desperation. The second thing is that it is part of a larger phenomenon. This country has moved away from what can generally be called the age of revolutions or mass movements. You, you look at the political scene scenario in India since independence or after 1950. I've written a essay on this. I call it No Decade of Peace. From 1950 onwards, show me one decade in which India has ever had peace, internal stability. Hartal, Band, railway strikes. These were the kinds of launch pads to from where all these guys have emerged as independent political parties. Now, apart from say Uddhav Thackeray or other folks like Naidu and not even Pinarayi Vijayan, but apart from very handful of these fellows, most of them are clones of Congress party. Congress party was their mothership. Mamata Yeah, Banerjee, yeah. Chandrababu Naidu's mothership was Congress party. NCP also same. NCP Yeah. also, yeah, the big one. NCP also. Hmm. And then you have this these two great fellows from Bihar, Nitish and Lalu. They call themselves shamelessly so that they are the shishyas, disciples of somebody like Jaiprakash Narayan. So you see, that era is over. That is one. And such leaders can thrive. And let's not forget this former PM, Chandrasekhar. He was anti-Congress within the Congress, so-called Young Turk or whatever. But anyway, that's a different story. So these things can thrive only in an atmosphere of constant instability. And the liberalization and afterwards, the forces that were unleashed after that pretty much killed off all these so-called mass movements, which were basically trying to tap into or create fissures in the society based on real or imagined grievances. The last person to successfully do this is in recent times is Arvind Kejriwal. Nobody else. So what are they doing now? They are taking this fight globally. Why can a George Soros, for example, or who's that other fellow, a eBay guy, I forget his name. Anyway, Jeff Bezos.
The Amazon guy. Bezos, not Bezos so much, but the other guy, man. He was funding the colored revolutions. eBay का founder जो भी था, that ठीक fellow. है. So Yeah, I think we'll discuss that at length also at some point. Yeah, wind it up. They're trying to take this fight globally now. correct. Which is And quite clear. and the only person and the only party which is apart, which stands apart from all this, which genuinely through actions and deeds, whatever you may call me, BJP supporter, that is immaterial. The record speaks for itself. BJP has never thrived on, it's never built its political base only by exploiting instability or engineering instability. That record Right. is clear. So, Right. yeah, those are my final comments. Okay. Thank you for joining us despite not being well today. Really appreciate it. And Prabhakar ji, last words to you. Please tell us exactly So what you I'll just to conclude, I'll hold my horses. I see this as a very interesting political development which is happening. As a journalist, I'm pretty much hooked onto it. This is I see it like a first serious attempt post 2008 when the opposition is trying to kind of make a front. Whether it works out or not, I have my doubts. Like all of us have our doubts. So I have my doubts here. It will be a faceless opposition as I see it, and it's just the beginning. So as Nitish Kumar and has always been saying, this is just the beginning. So let's not conclude. This is not the last meeting which is happening. This is just the first of the meeting which is happening, and this is playing out in Patna today. It will play out in other parts of the country, and it will be an interesting political drama which will play out. And as journalists, as citizens, we will be keenly watching it, keenly following it. What result it actually is would be it's a very tough thing to achieve actually. So what result they will be able to achieve, that would be seen in 2024 only. So till then, we'll just be a keen watcher, and interestingly, we'll be watching this whole political drama which Nitish Kumar is trying to pilot. Yeah. Yeah, and if the upcoming state elections do not go in BJP's favor, which some people are predicting, although I do feel that they have a very good chance of returning to power and retaining power in 2 states at least. If that doesn't go their way, then I think this ragtag group of leaders will really get a fillip, and I think that'll make 2024 even more exciting. But in the end, though, I think the BJP would like to say "Aayega to Modi hi," but we'll enjoy the ride till we get to that point. So thank you everybody for joining us, and thank you viewers. Do like and share this session if you enjoyed it, and of course subscribe to the channel. And we'll be back soon. Bye for now, and see you soon. Thank you very much.